Hello everyone, this is Sairam. Welcome back to my channel. I am back with another hands-on SQL tutorial. Today we are going to explore all types of insert queries in SQL Server from the basic to advanced. Let's begin. So first we are going to open SSMN SQL Server Management Studio with new query window. So first views database. Okay, so then let me check the table first if there is any rows are ever exist or not. In the students table there is no rows. Then in the students backup table also there is no rows exist. Okay, so let's start first. So first one is insert into a single row. So what is the syntax? The syntax for insert into a single row is insert, where is that? Insert into table name, wait. Table name sorry, with columns. How many columns are there? Roll number, name, age, indifferent, but the roll number column is auto increment, so I do not prefer to mention. So first the column name is name, then age, then department. Okay, then values. So values for one, only one, because in here I put insert a single row. So the first name is string. So within single quote, value 1, and the age is integer, so value 2, then the third value department. So within single quote I have to mention department name. This is the string syntax. Okay, so the example is insert, wait, the example is insert into table name. What is the table name? So the first table name is students, name is column names, different names, department. So the first value Krishna, and the age is 29, and department is CSE, column. Successfully done. So basic insert into with values in a single row. Query is successfully inserted. So the second, what is the second insert query? The second insert query is insert into a multiple rows. So insert into multiple rows. So in here the syntax is same, there is no difference syntax. So just remove the column. Instead of column I put column. So same. Okay, once again one more row. This is a syntax. Insert into table name, age, department. These are the columns. Column 1, column 2, column 3. Got it? So insert into table name, column 1, column 2, column 3. Values. What are the values? Value 1, value 2, value 3. This is for first row, and this is the second row, then the third row. Okay. So the can we go for the insert some
rows, some records have to insert. So what should I do? Just simple. Name is department. What is the table name? The table name is DBO students. First value is Gulati. Age is 28. Department is double E, triple E, not double E. Then Namita, and the age is 28. etc. And the third row values is Ansul. Values is the age 29, not 29. Just let me change 25. Values is civil. Okay, so Alt X for execute. So let me check the values. Student from students column. Here you can check the records. Okay, the roll number, I told you the roll number column is auto increment. So the roll number begins with 2501 000. Done. So now turn to third insert query. So insert query without a columns. So insert into without a columns means. So before insert without the columns means, I just want to say, if you are in a production environment, I do not recommend it to use this insert query because it may breaks the table schema. Okay, so now why this break the table schema? So like just in here, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, नॉर्मल कॉलम नेम दे के हम लोग पुट कर रहे थे, ठीक है. सो द फर्स्ट कॉलम वी नो, द फर्स्ट कॉलम इज character, in the second column is integer, in the third column is also character. Done. So if I go to insert into table name, okay, then values. So the first value 1, then the value 2, then the single quote value 3. Done. This is a syntax. Okay, so what is the problem you may face, मैं कह रहा हूँ अभी. So problem क्या होगा ना, आप just imagine करो, अगर मैं यहाँ पे विथआउट कॉलम में मैं यहाँ पे जस्ट रिकॉर्ड्स का जो कुछ भी वैल्यूज होगा यहाँ पे मैं पुट करूँगा, ठीक है. सो डाटाबेस के स्केमा के हिसाब से, स्केमा में क्या है, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉलम मेरा क्या है, रोल नंबर कॉलम, ये तो मेरा ऑटो इंक्रीमेंट होगा. देन नेम कॉलम, देन एज कॉलम, देन डिपार्टमेंट कॉलम. सो द नेम कॉलम, इंस्टेड ऑफ नेम कॉलम, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 कॉलम है मेरे पास. अगर मेरे पास सो मेनी कॉलम्स आर देयर इन वन टेबल, सो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको, प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे याद नहीं रहेगा कि पहले कॉलम में क्या दूँ, ठीक है. लाइक अभी मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेम के लिए मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ. अगर यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स होता नेम, एज, डिपार्टमेंट, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल, email, semester, then DOB, done. So in here how many columns are there? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
डन। सो 10 कॉलम है, अगर 10 कॉलम के लिए वैल्यूज भी मुझे उसी हिसाब से देना पड़ेगा। पहले मेरा कॉलम का पहले कॉलम क्या है, नेम। सो नाम ही देना मुझे। देन एज, इंस्टेड ऑफ एज जस्ट इंटीजर मुझे देना है। सो अगर मैं इंटीजर मैंने यहाँ पे दिया, फिर डिपार्टमेंट अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट आई पुट एड्रेस, देन मैं डिपार्टमेंट दूंगा। देन मैं फादर नेम की जगह मैं मदर नेम दूंगा। देन मदर नेम इंस्टेड ऑफ मदर नेम फादर नेम दूंगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम तुम्हारा स्केमा जो डिज़ाइन होगा ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट में सी एस सी ट्रिपल ई टी सी सिविल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा फादर नेम आ जाएगा। ठीक है, अगर एक भी रिकॉर्ड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे जस्ट सिंपल रिकॉर्ड्स स्केमा डिज़ाइन या रिकॉर्ड्स कुछ भी वो चेंजेस हो जाता है। तो इसलिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर यूज़ भी करते हैं तो बहुत केयरफुली कॉलम्स नेम याद रख के मेंशन करके यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर इंसर्ट इनटू विथआउट ए कॉलम नेम्स। सो एक एग्जांपल लेते, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल, व्हाट इज द टेबल नेम, स्टूडेंट्स, देन वैल्यूज, देन द फर्स्ट वैल्यू इज फर्स्ट वैल्यू। देखो यहाँ पे अगर मैं कॉलम नेम देता तो मुझे याद रहता फर्स्ट वैल्यू क्या है क्या नहीं। यहाँ पे मैं कॉलम भी दिया नहीं हूँ तो मुझे अभी याद आ रहा है क्या, याद नहीं आ रहा। दैट्स इट। उसी हिसाब से मुझे रिमेंबर करना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम हो सकता है नेम। ठीक है, सो नेम क्या रखूँ मैं, डोपामाइन, एंड व्हाट इज द एज, 24, डिपार्टमेंट इज IT, alt X, one rows affected. Done. Now let me check. Select star from students. So the dopamine 24 IT. अच्छा चलो, यहाँ पे हम लोग ना और एक चेक करते हैं, लाइक देखो फर्स्ट इज, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज को लास्ट में लिखूँगा। ठीक है, ये क्या हुआ, conversation failed when converting the varchar value IT to data type int. डन। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर देख लो यहाँ पे नेम की जगह में डिपार्टमेंट का नाम दे दिया, देन यहाँ पे डिपार्टमेंट की जगह नेम का नाम दे दिया, तो वन रोज अफेक्टेड, इंसर्ट वन रो सक्सेसफुली इंसर्टेड। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट आई पुट IT, नेम की जगह यहाँ पे ये डिपार्टमेंट में जाना चाहिए बट यहाँ पे नेम पे शो कर रहा है और डिपार्टमेंट पे नेम शो कर रहा है। सो दिस हैपेंस विथ ए इंसर्ट इनटू विदाउट ए कॉलम नेम्स। विदाउट ए कॉलम नेम्स अगर दोगे तो यही प्रॉब्लम है। सो नाउ टर्न्स fourth one. So the fourth one is insert into from select copy data from one table to another table. So what is the mean of copy data from one table to another table? So यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स टेबल है। ओके, so in here students table 6 records are there. Done. So one more table is there, the table name is student backup. Done. तो स्टूडेंट बैकअप टेबल में मेरा कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है मेरे पास। इन द स्टूडेंट टेबल आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स। सो
सो अभी मुझे करना क्या है, स्टूडेंट्स टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स मुझे कॉपी करना है, लाइक ए क्लोन टेबल, आपका ही डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। सो चलो बनाते हैं डुप्लीकेट। सो द फर्स्ट सिंटेक्स इज इंसर्ट इनटू, what is the table name, students backup, done. Then within the students backup table is department, okay. Then coming to select स्टार भी देने से होगा, नहीं, स्टार देने से तुम्हारा रोल नंबर ये सब थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो आई मेंशन ओनली स्पेसिफिक कॉलम नेम्स, डन। फ्रॉम, कहाँ से कॉपी होगा तुम्हारा टेबल, स्टूडेंट्स, डन। ये तुम्हारा सिंटेक्स है। सो ये तुम्हारा न्यू टेबल, लाइक क्लोन टेबल नेम है, ओके। एंड दीज आर द कॉलम 1, कौन सा कॉलम है, ये तुम्हारा क्लोन टेबल का कॉलम है, डन। सो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड द कॉलम 3। तो यहाँ पे ये इंसर्ट कहाँ से करेगा, इंसर्ट करेगा पहले ये सेलेक्ट क्वेरी रन करेगा, रन करने के बाद ये इंसर्ट करेगा स्टूडेंट्स टेबल से, डन। सो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। So from which table, existing table, existing records table, okay. So this is the syntax. So now we are going to check insert हो रहा है कि नहीं, copy data from one table to another table, copy हो रहा है कि नहीं देखते हैं। So the first table name, clone table name is student backup table, then column 1 2 3, column 1 2 3, 1 2 3 पे column पे क्या क्या है, so name is department. So in here I put name is department, then select start statement पे name is department, ये टेबल से, ये कॉलम से जितना भी रिकॉर्ड से existing record table, existing record table students. So first try to understand कि select statement जितने भी कॉलम से, स्पेसिफिक कॉलम से, स्टूडेंट टेबल से, यहाँ से तुम्हें पहले रिकॉर्ड क्वेरी चलाना है, क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे इंसर्ट इनटू पे स्टूडेंट बैकअप टेबल, ये बैकअप टेबल पे कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है, यू कैन चेक, डन। सो ये वाला स्टूडेंट्स बैकअप टेबल में नेम इज डिपार्टमेंट, सिर्फ क्लोन बना के ये देगा, 6 rows are affected. So now we are going to check the students backup table, okay. So select star from students backup table, column. Now you can check whole records are copied from one table to another table, done. And this is very useful for backup or copying filtered data between one table to another table, done. In this video now you have just learned all major types of inserted queries in SQL Server from basic to advanced, okay. If you found this helpful, please like the video and don't forget to subscribe for more SQL Server content. See you in the next video.
Thank you very much.